Good morning students and welcome in today's lecture. Today we will start 2.1 Invictus. This poem is written by William Ernest Henley. Before starting this poem, I want to tell you about the poet and what is in the poem. The central idea of the poem revolves around the poet's struggle and hardship that he had encountered at a very young age, and how, in spite of all these trials and uh, tribulations, he fought with resilience to not only overcome them but also develop an attitude where he believes that no matter what the situation is, he will always be in full control of his life. The poet wants to be an ardent fighter of difficult and have a never say die attitude. See, the tone of the poem is inspirational. Every poem has a tone, no? Serious, motivational. So, in this poem, the tone of the poem is inspirational. Invictus was written by the English poet Henley. This is a short Victorian poem written in 1875 and published किया उसने 1888 में. Here he talks about the deep realities of life where are not smooth and flawless. He knows the hard truth of life that everyone's life is full of troubles which comes with different circumstances. See, what is in the poem? This poem is inspirational. Huh? And he talks about the reality of life that everyone have the troubles and hardship, but you have to overcome it. हाँ, ये थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी टाइप है. कीप थिंकिंग, नो बडी हैज़ अ परफेक्ट लाइफ, एवरी वन हैज़ द सॉरोज. किसी का दिखता है, किसी का नहीं दिखता है. नोज हाउ टू डील, कैसे उस सॉरो के साथ और ओवरकम के प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है. एंड फेल टू अंडरस्टैंड, नेवर फेल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे वेरी यंग एज में पोएट के पास इतना यानी हार्ड स्ट्रगल था और उसने उस पर इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस यू ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स एंड एडवर्सिटीज़ बैड सर्कमस्टेंसेस में. तो ये मोटिवेशन भी है, इंस्पिरेशनल पोएम भी है कि इससे हम लोगों को जो रियलिटी है, एवरीवन दोज हु आर हैव अ बर्थ 100% दे हैव अ डेथ, और डेथ की रियलिटी इस पोएम में पोएट ने दिखाई है अपने ओन, जस्ट लाइक ऑटोबायोग्राफी जैसे. सो एवरी वन हैव द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू लिव द प्रॉब्लम्स विथ होप्स. ट्रैप इन डिस्प्रेशन, अगर सैड में होते हैं आप लोग तो उसको ओवरकम करके पॉजिटिव व्यू से आपने आगे बढ़ना है. Before explanation, I want to tell you that what is, there are 4 stanzas. See, the first stanza. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. See, unconquerable means no one can conquer on my soul. Out of the night that covers me means night is the symbol, that is the darkness in his life. पोइट की लाइफ में का डार्कनेस है वो नाइट से एक्सप्रेस किया उसने. सेकेंड स्टांजा. इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंसेस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड अंडर द ब्लजनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज ब्लडी बट अनबोर्ड. लीक्ड सर्कमस्टेंसेस means bad circumstances in poet's life, reacted with pain nor cried aloud. बहुत जोर से वो ऐसे रोया भी नहीं है, but he faced the problems with enthusiasm. Invictus means unconquerable. Next stanza. Beyond this place of wrath and tears, meaning देखो, pronunciation देखो, looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years find and shall find me unfair. See, looms means appears. World of anger and sadness. This world is everywhere sadness and bad things, but dark and unknown. Every
सैड थिंग इज डार्क एंड अननोन, डज नॉट मेक्स हिम अफ्रेड, पर कितना भी डार्कनेस है उसके लाइफ में, लेकिन उससे वो अफ्रेड नहीं हुआ है, डरा नहीं हुआ है. ही फेस द प्रॉब्लम्स विथ करेज. Menace means threat, danger, you can say. And last stanza, it matters not how straight the gate, how charged this punishment the scroll. I am the master of my fate, and I am the captain of my soul. These two lines, last lines, are very inspirational, and you can write this with the um, favorite lines in appreciation. Now I can explain it with the first stanza. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. See, thinking positive. Unconquerable soul means invinced or cannot be captured. I am always positive, though so many problems are in my life. Pit means a large deep hole. होप्स ऑफ सनशाइन, यानी मेरे जीवन में अभी भी होप्स है. आई एम नेवर गिव अप नहीं किया है. सी, सो आई विल फेस एवरी प्रॉब्लम विथ एनकरेज. देन नेक्स्ट स्टांजा, इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी मैं ऐसे जकड़ गया हूँ, वीक टू ट्रैप, ऐसे पूरे ट्रैप में फंस गया हूँ. आई हैव नॉट विंस नॉट क्राइड अलाउड, मैंने क्या किया, मैंने डरा भी नहीं है, और जो पेन से मेरे साथ हुए हैं उससे मैं डरा भी नहीं है. आई फेस द प्रॉब्लम. विंस्ड मीन्स टू श्रिंक, दचकणे. अंडर द ब्लजनिंग्स ऑफ चांस, ब्लजनिंग्स मीन्स वायलंट बीटिंग विथ अ क्लब. जो चाबूक म्हणता ना आपण त्याला म्हणतात ब्लजनिंग्स ऑफ चान्स. माय हार्ट इज ब्लडी विथ अनबोर्ड, and a poet's heart is bloody. Bloody means so many sorrows are in his life. The poet here describes that bloody headed or even shake to the extent that the feeling of horror may shower upon the person. But what is important at this stage is to feel strong, keep your head up and fight against such problems. यानी कितने भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, मैंने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया है. द पोएट सेज, एंड आई फेस एवरी प्रॉब्लम विथ करेज एंड फाइट विथ देम. अंडरस्टूड. देन थर्ड स्टांजा, बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रैथ. व्हाट डू मीन बाय रैथ? मीन्स हेट्रेड, एंगर, यानी लाइफ में मुझे बहुत सारा एंगर मिला है, हेट्रेड मिला है. एंड टीयर्स, सो मेनी टाइम्स देर आर टीयर्स इन माई आईज, मीन्स sadness. Looms but the horror of shade. Looms means appear or hang overhead, यानी मेरे सर के ऊपर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड यानी ट्रैप में मैं फंस गया फिर भी. एंड येट द मिनेस ऑफ द ईयर्स, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम थे वो धोखा, एंगर, ट्रैप था. इन दैट ईयर्स फाइंड एंड शैल फाइंड मी अनअफ्रेड. और कितना भी मुझे प्रॉब्लम्स आए तो मैं, आई एम ऑलवेज होपफुल. ही रियलाइज द फैक्ट दैट देयर विल बी मोर सर्कमस्टांसेस इन द फ्यूचर. क्या सोच के वो खड़ा रहा डट के कि आगे मेरे लाइफ में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होंगे, दैट विल बी होपफुल. और हाउ एवर द पास्ट ट्रबल ईयर्स हैड प्रिपेयर्ड हिम फॉर द फ्यूचर वन. कितने भी पास्ट ट्रबल्स है मेरे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर हैप्पीनेस आता है तो आई कैन फॉरगेट इट. नाउ द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टांजा हियर. इन दिस स्टांजा इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट. कौन सा गेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो गेट कितना भी स्ट्रेट हो. अभी यहाँ पे जो गेट है डेथ के बाद, पोएट बोलता है कि मेरी डेथ पास आ रही है. ही इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन अर्ली यंग एज. तो उसको उसका जो डेथ है वो सामने दिखता है, और वो बोलता है कि अगर हेवन का गेट जो है वो कितना भी छोटा है, स्ट्रेट है. हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रोल. अगर आपने लाइफ में ऐसे बोलता है, स्क्रोल मीन्स
a roll of paper for writing on. मेरे लाइफ में जितना भी है